अगर मेसी पीएसजी के लिए खेल रहा होता तो बारसा हैड अ चांस कि आराम से जीत जाए। To save your podcast prediction, you went with PSG. Just to save your podcast prediction. I mean, that is Yeah. biasness. Hi guys, welcome to another episode of Football Weekly or Football Monthly or whatever you can say. So me and the boys are back again with another episode. And in today's episode, we are going to talk about the predictions about the Champions League quarterfinals. अभी quarter final on the line है and हमारे पास दो बार्सिलोना फैंस दो रियल मैड्रिड फैंस हैं, नॉट अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन ऑब्वियसली। तो आज हम लोग प्रेडिक्शंस देंगे एंड ये पॉइंट सिस्टम रखें कि ना रखें। किस चीज के लिए? प्रेडिक्शंस के लिए? हाँ, प्रेडिक्शंस के लिए। हाँ हाँ, रखो, एकदम रखो। कौन मना कर रहा है? ठीक ठीक है। सो तुम लोग के लिए स्क्रीन पे वो आ जाएगा, बट मैं ऐसे बोल देता हूँ कि क्या पॉइंट सिस्टम मैं रखना चाहता हूँ। लाइक अगर एग्जैक्ट स्कोर लाइन मैच होती है बोथ लेग्स के एंड पे, तो द पर्सन विल गेट 3 पॉइंट्स। अगर स्कोर मतलब गोल डिफरेंस मैच होता है तो द पर्सन विल गेट 2 पॉइंट्स। अगर विनिंग टीम केवल सही प्रिडिक्ट कर पाते हो तो यू विल गेट 1 पॉइंट, एंड गलत प्रिडिक्शन होती है तो ऑब्वियसली यू विल गेट 0 पॉइंट। जब तो स्कोर लाइन मैच करेगा तो 3 पॉइंट्स। हाँ, स्कोर लाइन मैच कर गया 3 पॉइंट्स। गोल डिफरेंस अगर मैच कर गया, लाइक अगर तुमने 3-2 प्रिडिक्ट किया और 4-3 होता है तो विल अच्छा गेट अच्छा, टू ठीक। पॉइंट्स हाँ, ओके, एंड नाइस। अगर तुमने सही विनर प्रिडिक्ट किया है तो यू विल गेट वन ठीक है। पॉइंट एंड इफ यू प्रिडिक्ट रॉन्ग यू विल बी गिवन -1। और इसके तो बाद का स्कोर पे प्रेडिक्शन होगा फिर जिस स्कोर का क्या बोल रहे हैं? स्कोर पे प्रेडिक्शन होगी मतलब, या फिर स्कोर लाइन कौन स्कोर करेगा, या फिर उसका भी कुछ नहीं नहीं, एडिशनल पॉइंट्स नहीं नहीं होंगे? स्कोर का या प्रेडिक्शन सिटी? नहीं रखते हैं बिकॉज नहीं रखते हैं बिकॉज अच्छा इट विल मेक इट अच्छा। मोर कॉम्प्लेक्स। हाँ, तो सिंपल रखते हैं। तो ओके। स्टार्ट करते हैं पहले मैच से। फर्स्ट मैच इज बिटवीन आर्सेनल एंड बायर्न म्यूनिख, two heavyweights, one coming into the Champions League after so many years, and one Champions League giants, Bayern, उन्होंने 6 बार चैंपियंस लीग जीता हुआ है। ऑल्दो बायर्न का फॉर्म यू कैन सी कि कैसा चल रहा है। इवन टुडे दे लॉस्ट, लेवरकुसेन बुंडेसलीगा जीत रहा है, एंड आर्सेनल इज डूइंग गुड इन द प्रीमियर लीग। लाइक आई गेस वो थर्ड पे चल रहे हैं बिहाइंड मैन सिटी एंड लिवरपूल। फर्स्ट, अभी फिलहाल फर्स्ट। अभी फर्स्ट, या मतलब मैच को अगर आप काउंट ना करें तो without wasting any time, I'll start with Cheyenne. I want to know the exact scoreline which you think for the match and a little glimpse जो तुम्हें फील होता है इस मैच से तुम्हें देखने को मिल सकता है। लाइक बोरिंग साइड मैच मिल सकता है, इंटरेस्टिंग होगा। आई वांट टू नो योर टेक ऑन दिस। Okay, for the team which I think will win, I'll go with Bayern. Or the score line will be, I'll go with 2-1 at Allianz Arena and 2-2 at Emirates. So basically फोर वो थ्री कितना ओवरऑल क्या हो गया? प्रोडिक्शन, 4-3। 4-3 overall. So I think कि बायर्न ऑब्वियसली लीग में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, आर्सेनल लीग में अच्छा परफॉर्म कर रही है, बट यूरोप में लीग फॉर्म डज नॉट मैटर। वी हैव सीन दैट लॉट ऑफ टाइम्स कि जो टीम लीग में अच्छा खेल रही होती है वो चैंपियंस लीग में नहीं कुछ कर पाती, और जो टीम अच्छा नहीं खेल रही होती लीग में वो चैंपियंस लीग जीत जाती है। लास्ट टाइम लाइक बायर्न का कोच ही करके दिखाया थे टुचेल चेल्सी के साथ। सो और प्लस आई थिंक कि इन दिस टूर्नामेंट एक्सपीरियंस काउंट्स फॉर अ लॉट, और जो कि बायर्न के पास है, आर्सेनल के पास अभी फिलहाल नहीं है। हो सकता है आ जाए 2-3 साल बाद, पर आई थिंक कि जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस और यू नो द कैलिबर, बेसिकली कैलिबर ऑफ द क्लब, कैलिबर, हिस्ट्री, वो सब काउंट करेगा एंड बायर्न विल गो थ्रू। और आई थिंक कि एक सेंस ऑफ व्हाट आई वी विल गेट टू सी इज कि फर्स्ट लेग थोड़ा केजी होगा, सेकेंड लेग थोड़ा एक्साइटिंग होगा, और सेकेंड लेग में आर्सेनल विल बॉटल। So basically, they'll go ahead and then Bayern will come back. Okay, got your point. Nice. Nikhil, what's your take on the match? So I think the first leg will go 2-1 Arsenal, right?
आई थिंक आर्सेनल विल हैव अ लीड एज शायन सेड कि प्रीमियर लीग में जो लोग परफॉर्म करते हैं फिर चैंपियंस लीग में नहीं करते हैं, ट्रू, बट द वे आर्सेनल इज परफॉर्मिंग, द वे द टीम हैज ब्लेंडेड, राइट, आई थिंक वो अभी तक बायर्न में नहीं हुआ है। तो उस रीजन की वजह से आई विल पिक आर्सेनल। सो फर्स्ट लेग में आर्सेनल आई थिंक इट विल बी 2-1 इटसेल्फ, अच्छा राइट, एक सेकंड, एंड सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट, फर्स्ट लेग है कहाँ? मेरे को लगा फर्स्ट लेग It's एलियांज at अरीना में, उस वक्त मैं बोला था। एमिरेट्स एमिरेट्स it's एमिरेट्स Emirates, एमिरेट्स है, Emirates. अच्छा फर्स्ट लेग एमिरेट्स है। एमिरेट्स में, अच्छा तो फर्स्ट लेग 2-2 होगा, सेकंड 2-1 होगा। मेरा प्रेडिक्शन चेंज You're कर दो जैसा। ठीक है, सॉरी you're निखिल, still कंटिन्यू। going with वही मुझे you're चेक still करना going with पड़ता Bayern, जब right? प्रेडिक्शन। आई You're स्टिल still आई एम going स्टिल with गोइंग विद Bayern. बाय। So I'm going with Arsenal 2-1 at the Emirates, right? And Mhm. at the Alliance 1-0 Arsenal. So it'll be like 3-1. एलियांज में मतलब दोनों लेग बायर्न विल लूज. Yeah. Cool, cool. मैक्सिमम सेकंड लेग अगर ड्रॉ होता है तो ठीक है, बट आई एम नॉट गिविंग देम दैट शॉट, ऑल्दो केन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट आई थिंक उल्टा हो जाएगा कि बायर्न पूरा बॉटल कर जाए, तब तक उनके हाथ से जा चुका होगा बुंडेसलीगा, और चैंपियंस हाँ, लीग में भी अगर वो फर्स्ट लेग हार के जा रहे होंगे तो देयर इज अ हाई चांस दैट दे कैन आल्सो बॉटल. सो देयर कैन बी अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट या आई विल गो विथ 3-1 इन टोटल एग्रीगेट आर्सेनल. cool, cool. Vaibhav, your take? तो इसमें फर्स्ट लेग एमिरेट्स पे होगा। सो बेस्ड Hmm. ऑन करंट फॉर्म एंड जैसे निखिल एंड शायन दोनों ने बोला, करंट लीग फॉर्म मैटर नहीं करेगा, बट आर्सेनल एमिरेट्स पे दे विल गो एंड विन 2-1 इन द फर्स्ट लेग, क्लोज होगा। एंड बट आर्सेनल विल डोमिनेट क्योंकि होम सपोर्ट होगा। इन द अवे लेग बॉटल नहीं करेगी, दे विल प्रोबब्ली सोक इन द प्रेशर लाइक दे डिड अगेंस्ट सिटी एमिरेट्स में, वो एथिहाद में Hmm. थोड़ा ठीक है, मतलब देयर अप्रोच विल बी डिफरेंट, बॉल लेकिन सो इट विल 1-1 आई थिंक सेकंड लेग। सो आर्सेनल विल गो थ्रू 3-2 ऑन एग्रीगेट, इट विल क्लोज, मतलब वी वोंट सी अ ऐसे हैमरिन टाइप की 5-1 5-1 टाइप जैसे लास्ट टाइम होती थी, हाँ, बिकॉज तब हाँ, से हाँ. चीजें चेंज काफी एंड बदल गए. एक्सपीरियंस नहीं है, जैसे चैन ने बोला, निखिल ने बोला एक्सपीरियंस नहीं है टीम में, बट despite that not everything has to do with experience now, you have to take into account quality, और जैसे बायर्न खेल रही है, जैसे आर्सेनल खेल रही है, you have to consider Arsenal, like Arsenal they'll go through for me 3-2 overall, 2-1 and 1-1. Okay. Arsenal अभी dominate करता हुआ. But I'll ask from Gaurav. Your take, Gaurav. मेरे हिसाब से इट वुड बी 2-1 एमिरेट्स, 2-1 एलियांज, पर 3-all का टोटल, और फिर पेनल्टीज में जाएगी गेम, और वहां से आर्सेनल शुड क्वालिफाई। दो, आई डोंट थिंक आज तक यूसीएल में ऐसा हुआ है कि कोई एक ही टीम ने 2 बार अपने पेनल्टी शूटआउट्स जीते हो उसी सीजन में, तो दैट वुड बी अ Hmm. न्यू थिंग, पर आर्सेनल शुड विन दिस, बट इट वुड गो यार टिल द पेनल्टीज। एक क्वेश्चन बस, गौरव, यार पेनल्टीज पे बायर्न विल हैव मैनुअल नॉयर। हाँ, मैनुअल नॉयर वहां तुमको नहीं लगता कि बायर्न को एक एडवांटेज होगा? आई हैव सफर्ड एट द हैंड्स ऑफ मैनुअल नॉयर इन अ पेनल्टी शूटआउट 2012 में। आई नो। नहीं, स्टिल आर्सेनल तो अगर शुड गेट पेनल्टी, इट। यानी सब ठीक है, बट पेनल्टी Not से मेरे को लगता है अगर जाएगा तो फिर बायर्न आर हैवी फेवरेट जस्ट बिकॉज ऑफ द गोलकीपर दे हैव गॉट। Manuel Neuer fit है अभी. अभी आई हाँ गेस नॉय तो फिट फिट। है, नॉय खेल रहे, नॉय खेल रहे, just wait. तो Okay. हाँ, यही So रहेगा। हाँ, ठीक है. तो I'll only And give the scoreline. if it goes to shootout, if it goes to shootout, I can see Saka scoring because he will have demons in his end for missing that against नहीं Donnarumma. पड़ेगा, That करना ही पड़ेगा, he's one brave boy, and करना ही he will पड़ेगा. score. पोर्टो के And अगेंस्ट स्कोर कर दिया था people वो। will talk about this moment. Yeah, he actually came back and साका का, scored the penalty last time. Yeah, हाँ worries. पोर्टो के अगेंस्ट, और इस बार Hmm. मिस करेगा। Yep. अरे, तो वहाँ तो अगर मैं अपना टेक दूं तो मैं बताता हूँ. I'll be biased towards Bayern just because their मतलब उनका चैंपियंस लीग टूर हमेशा से अच्छा रहा है, एंड आई फील कि चैंपियंस लीग में उनका डोमिनेंस रहेगा थोड़ा, मतलब इट विल बी टू सून फॉर देम.
like seeing past year performances. So I feel कि Bayern will win this. मतलब काफी गोल डिफरेंस वाला नहीं होगा, but I feel कि 1 से 2 गोल का डिफरेंस होगा. Maximum scoreline which I can predict is 3-2 Bayern. I'll say 3-2 Bayern. I'll write. Also, Neuer is not fit for the game. He's अच्छा, not Neuer is fit. not fit. He's रिटर्न not लेग fit. के लिए Then तो then फिट हो जाए, शायद. अरे तो फिर क्योंकि उसका अरे हाँ नहीं मेन बात 100% फिट पेनल्टीज रहने तो से वो होगा रिटर्न ना. लेग में होगी ना. अभी तो पेनल्टीज फर्स्ट लेग में पेनल्टीज नहीं होने, पेनल्टीज तो सेकंड लेग में. वो मतलब मैंने सिर्फ पेनल्टीज पे बोला कि अगर पेनल्टीज पे जाता है तो फिर बायर्न विल बी फेवरेट बिकॉज ऑफ मैन ऑफ But द if मैच. the person बाकी is not गोलकीपर के साथ 100% खेला fit, Shayan, if the person is not 100 fit, पेनल्टी क्या है, then तो दौड़ना थोड़ी still. है, तो कूदना बस. गोलकीपर को क्या ही काम रहता है फिटनेस का उतना. खड़े रहता है एक जगह पे. और पेनल्टीज में तो और. But एक मिनट you, हाँ हम लोग के साथ भी एक गोलकीपर है. रिएक्शन देना एक बार, कुमार गौरव. सर हेलो. पे हाथ रख तो लिया. but you guys are underestimating Raya. ठीक है, Raya is not as good in terms of saves, no जितना, but when it comes to penalties, some keepers are way better than others. Emi Martinez, वो best keeper नहीं है world में, but when it comes to save, when it comes to mind games, वो बहुत आगे सबसे. तो Raya is not that far behind. Ramsdale इतना अच्छा नहीं है, I can understand, but मैं Raya is, मैं तो बोल रहा हूँ कि जो उसने Portuguese किया ना, that is not normal. राया के वजह से जो बॉल डिस्ट्रीब्यूशन राया का इतना खराब है, उसके वजह से पेनल्टी तक जाएगा ही नहीं. मेरे को लगता है वहीं कोई एरर हो जाएगा. It's नहीं about the instinct also कि आप किस तरफ कूदते हो. Luck also. Yeah. Luck favors the brave. नहीं, it's not luck, it's more of a mental game. It's not just luck and penalties now. It's completely a mental game between the striker मतलब and the they goalkeeper. they'll obviously have the stats ना कि अच्छा केन हैरिक इधर जाता है, अच्छा ही मुसियाला इधर मारते हैं, सान इधर मारते हैं. सो एंड दे आर नॉट गुड एट पेनल्टी टेक्स. मतलब प्रेशर में वी हैव सीन केन मिस. तो ऐसा भी नहीं कि मतलब बायर्न विल स्कोर एवरीथिंग. दे माइट जस्ट चांद मार दी मैसी की तरह once upon a time. So never know. Moving ahead to the चल. second match, Real Madrid versus Man City. रियल मैड्रिड को आप जानते हैं चैंपियंस लीग में कैसा डोमिनेंस रहा है ओवर द इयर्स. दे हैव 14 यूसीएल टाइटल्स, बट लास्ट टाइम उनका डोमिनेंस या घमंड एक टीम ने तोड़ा था जिसका नाम है मैनचेस्टर सिटी. सो या Sounds बीइंग like Baba बायस्ड, का सॉरी comment. सॉरी फॉर बीइंग खुश बायस्ड. खुश तो बहुत हो गया आप. So I'll start with a Barcelona fan because Real Madrid का मैच है. So Gaurav, what is your scoreline prediction for this match and how do you see this match कि पिछले साल जैसा होगा या पिछले के पिछले, because इनके मैचेस पढ़ते रहे ओवर द इयर्स चैंपियंस लीग में क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल्स. तो क्या वो एक तरह का मतलब फ्लैशबैक देखने को मिल सकता है? मेरे हिसाब से इट शुड बी अ 4-3 एग्रीगेट जिसमें सिटी डज विन. बस वही होगा जैसा पहले रहता है कि फर्स्ट लेग बहुत कंटेन करेगा, सेकंड लेग आके पूरा तोड़ देगा, इन जनरल जैसा सिटी करता है. और है भी है कि सेकंड लेग इस बार एटिहाड पे, तो पूरा जब स्क्रिप्टेड है उस वे से चलने के लिए मेरे हिसाब से तो 4-1 जाते हुए दिख रहा है मेरे को क्रिकेट. 4-3. 4-1 4-3. 4-3 सॉरी, हाँ 4-3, एक का गोल डिफरेंस. Okay, so I'll ask another Barca boy, Vaibhav. How do you see this match, buddy? So first leg since we know होगा बर्नाब्यू में. एंड Hmm. first leg Madrid will put pressure. They will start strongly and it will be a close game. So I'll say 2-1 to City. City will just find a way because they haven't lost a match, I think, in a very long time. So if the whole squad plays, because I think Walker would be fit, or Stones तो आया था आज खेला था. So Stones and everyone is fit. Stones वही midfield में आके हरकतें करेगा पैटी की तरह. And it will be a very interesting game. 2-1 at Bernabeu. And in the return leg, I think it will be a bit similar to the last year. थोड़ा अप्रोच चेंज करेगा, but I think 3-0, 3-1 in the 88 leg, second leg, and 2-1 at Bernabeu. So it's 5-2 in total. And Cordova नहीं खेलेगा, so it will be a lot easier. And Militao
वापस आ गया, बट मिलिटाओ को शायद इंटीग्रेट ना करे टीम में इतनी आसानी से, इवन तो खेला था पिछले हफ्ते वो। बट कोर्टो के ना होने से और लूनिन के होने से बहुत डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले बोला था और मैं भी बोलूंगा, लूनिन है तो फिर इट्स वेरी इजी फॉर सिटी टू capitalize on that. I mean, Koto is a Like, very big gap. He leaves a very big I, gap in goal. I cannot see too many happy faces after you predicted this score line. नहीं, But मेरे को Because बस then एक I चीज speak, पूछना है I'm in trouble. कि ठीक है कि यू आर सेइंग कि लूनिन इज नॉट अ बेटर गोलकीपर देन कोर्टवा, दैट इज फाइन, हाँ ये तो बट अभी ला लीगा में बेस्ट रिकॉर्ड अगर किसी कीपर का है पूरे लीग में, दैट इज लूनिन। हाँ हाँ तो पुट सम अरे हाँ रिस्पेक्ट वो ऑन हिज तो गेम। अरे वो सी अरे रिकॉर्डिंग तो के ठीक है, स्टार्टिंग अब में मैं बोला गया अरे था वो कि लीग इसने का परफॉर्मेंस और यूरोप का परफॉर्मेंस सेम नहीं हो सकता है। एग्जैक्टली प्लेयर का नाइन्टी गौरव ने मिनट गौरव परफॉर्मेंस और बोला टीम ना। का परफॉर्मेंस में डिफरेंस होता है। और ला और लीगा में बेस्ट जैसे गोलकीपर होना और मैन यूरोप सिटी को में करना जो नहीं, प्रीमियर लीग से आ रहा हो, डिफरेंस है। और शैन यूरोप अच्छा में एक क्वेश्चन बता शैन, पिछले इन नहीं ठीक है, अच्छा बोल बोल नहीं फिर बोल बोल नहीं पिछले राउंड में यूरोप में भी कंटिन्यू। जो हम लोग लीप्जिग को हराए थे ना, उसमें लूनिन मेड लाइक अराउंड 20 सेव्स इन द फर्स्ट लेग और 10 सेव्स इन द सेकंड लेग, और उसी के वजह से एक ही गोल मार पाया था लीप्जिग पूरे गेम में। और ला लीगा में लूनिन हैज बीन द बेस्ट गोलकीपर, अगर इफ यू लुक एट द स्टैट्स की द नंबर ऑफ क्लीन शीट्स, नंबर ऑफ सेव्स पर गेम, शॉट सॉरी शॉट स्टॉपिंग परसेंटेज, सब में लूनिन नंबर 1 पे। तो आफ्टर दैट इफ यू कम एंड से कि लूनिन है कोटवा की जगह और उस वजह से सिटी के लिए आसान हो जाएगा, दैट इज रिडिकुलस। नहीं, इफ यू आर सेइंग कि अगर हालैंड के आगे कोर्टवा और लूनिन दोनों में से एक ऑप्शन मिले एंड यू आर चूजिंग लूनिन ओवर कोर्टवा, देन दैट टेल्स समथिंग। नहीं नहीं वही 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 यार, आई वही एम है। नॉट उसकी आई उसकी एम बात नॉट सही है। सेइंग कि ल्यूनिन इज द लूनिन, see I'm not saying Lunin is a better goalkeeper than Courtois, but I'm not saying कि वो ड्रॉप ऑफ लूनिन और कोर्टो में इतना ज्यादा है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिफरेंस पड़ने वाला है। अगर वो डिफरेंस पड़ना होता तो ये सीजन पड़ चुका होता अभी तक, नहीं, राइट नाउ क्योंकि आई कोर्टवा थिंक सीजन के द स्टार्ट से नहीं खेल रहा I think the main thing is कि it's not just about the goalkeeper in Man City. As you said कि 20 shots पड़े हैं हम लोग को, वो भी Leipzig के against, है। right? हाँ, So it's more about the defense line and the goalkeeper, and you need a very strong combination of both to stop Man City. जो जिनके very सात true. आठ गोल स्कोरर रहते हैं एक पर्टिकुलर 11 के शीट में, बस गोलकीपर गोल नहीं मार रहा उनका, बाकी सब गोल मार रहे हैं. So you need a very good combination of बट defense line plus goalkeeper. So I think that is the main बट point, निखिल not ये भी तो Porto or देखो, Loon. ठीक कोर्टवा नहीं है, लूनिन एज शैन सेड, लूनिन हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट कीपर्स इन ला लीगा, एवरीथिंग। लाइप्जिग अगेंस्ट बहुत सेव किए बहुत, बट जस्ट इमेजिन लाइप्जिग के अगेंस्ट, लाइप्जिग में क्या ग्रिलिश था, लाइप्जिग में क्या फिल फोडेन था, हु इज लाइक करेंटली द बेस्ट प्लेयर इन प्रीमियर लीग, मतलब क्या फ्री हालैंड था शॉट उनके आए पास। ना सिटी की जस्ट तरफ से, इमेजिन द हमको देखना है लुलिन कितना सेव करता है उस बीच एग्जैक्टली, में आई एम से, जस्ट अगर सेइंग सिटी वो का भी तो प्लेयर बेस्ट वो देख फ्री रहे हैं, वो शॉट बेंच से लेता है। ग्रिलिश ला रहे हैं, ही इज ब्रिंगिंग ग्रिलिश फ्रॉम बेंच, ही ग्रिलिश विल को मिला ना कि ही इज नॉट परफॉर्मिंग, लास्ट ईयर ही कुक्ड कारवाल एंड देयर इज नो डिनाइंग कि ही कुक्ड, ही लिटरली कुक्ड कारवाल इन द सेकंड लेग। वो बच्चे से खिला, कारवाल इज लाइक अ ग्रेट राइट बैक 10 साल से। तो यू कैन जस्ट इमेजिन द इम्पैक्ट कि यार सिटी के पास जो है, आई एम नॉट सेइंग लूनिन वाला फैक्टर ही जस्ट वो है कि यार इट्स वेरी इजी डूइंग, अरे लूनिन नहीं है तो फिर अब लूनिन है तो मार देंगे गोल्स, बट उनकी डिफेंस इज नॉट इतना इजी, क्योंकि मिलिटरी नहीं है एज यू सेड, रूडिगर और नाचो और सीबी खेलेगा भी या फिर चुआमेनी खेलेगा, तो उतना कंटेन नहीं कर पाएंगे सिटी को जितना प्रोबब्ली इजी लग रहा है। ये बोल रहा हूँ कि सिटी का अटैक इस, मतलब जो अभी देखो 4 गोल मारे उन्होंने, Ruthless. One of the best. Yeah, it's तो one of the वन ऑफ द बेस्ट, या One of the मतलब best आई नहीं, थिंक ओनली one of the best नहीं, the best, the best. आप one द of the best बेस्ट। बोल ही आई नहीं थिंक सकते, it's the best. आई थिंक आर्सेनल विल मैन कि आर्सेनल शायद ज्यादा गोल मारे सिटी से, आई थिंक ही स्टार्ट was is somewhat very close. Arsenal has scored more goals than City somewhat in Premier League this season. So in terms of attack, City and Arsenal काफी ज्यादा अच्छे हैं, तो इसलिए दैट्स आई एम लिटिल बिट इंक्लाइंड टू आर्सेनल की वो बाइंग जीते एंड एज वेल एज सिटी, बट क्लोज गेम जाएगा, ऐसे नहीं कि मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगा, बट सेकंड लेग में इट विल बी 3-1 एंड एज आई सेड फर्स्ट लेग में इट विल बी yeah. You said 2-1 5-2 City. to City. So I'll ask the scoreline from Cheyenne what he expects from the match. See, the one thing is कि City are a good team, ठीक है, I'm not denying it, but I think people are seem to neglect that Real Madrid are coming into the game after 9 days rest, 9 to 10 days rest. City in that time period played Arsenal, played Aston Villa, and played Crystal Palace today. They won, नहीं, Arsenal के against draw था, बाकी 2 games they won, scoring 8 goals. But Madrid
हैव बीन प्लेइंग गुड। और मेन बात है, अभी जो 9 दिन का रेस्ट मिला है ना, आई थिंक दिस विल बी अ की फैक्टर। गुआर्डियोला भी जब स्केड्यूल निकला था उसके बारे में काफी कंप्लेन कर रहा था कि मैड्रिड के पास 9 दिन का रेस्ट है और हम लोग को 3 गेम खेलना है उसमें। और आई थिंक कि ये एक रीजन होगा जिसके वजह से रियल मैड्रिड विल हैव अ फिजिकल एडवांटेज गोइंग इनटू द गेम ओवर सिटी, जिसपे कैपिटलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बर्नब्यू में है, वी हैव लाइक 9 days रेस्ट, और ये मैच जीतना, फर्स्ट लेग जीतना बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक सिटी इन द फर्स्ट लेग विल बी देयर फॉर द टेकिंग। आई थिंक फर्स्ट लेग आई गो फॉर 2-3 रियल मैड्रिड। वो ऐसा नहीं होगा कि पूरा गेम में डोमिनेट करके, हाँ, एक गोल 20 मिनट बाद, 30 मिनट बाद, वैसे नहीं। पहला एक वन वन एक गोल लगेगा फर्स्ट हाफ में, उसके बाद 2 क्विक गोल्स, वन आफ्टर द अदर, उसके बाद 3-0 जीतेंगे। सेकेंड लेग वी लूज बाय द सेम नंबर ऑफ गोल्स बाय विच वी हैव वन द फर्स्ट लेग, जिसके बाद गेम एक्स्ट्रा टाइम में जाएगा एंड देयर विल स्कोर वन एंड गो थ्रू। सो What? बेसिकली इट विल बी काइंड ऑफ लाइक अ 4-3 विन, जिसमें फर्स्ट लेग 2 या 3-0 जीतेंगे, और सेकेंड लेग सेम नंबर ऑफ गोल से हारेंगे, और उसके बाद एक गोल सेकेंड लेग के एडेड टाइम में मार के जीत जाएंगे। तो बेसिकली आई एम गोइंग फॉर अ 4-3 और 3-2 विन ऑन एग्रीगेट। Madrid. मैड्रिड। लास्ट टाइम रियल मैड्रिड के पास 9-10 दिन का जब रेस्ट था, तो फिर वी लाइक डिफीटेड बार्सिलोना 4-1, जिसमें 7-8 गोल लग सकता था उस गेम में। और उसके बाद फिर फिक्सचर्स पाइल अप होना शुरू हो गए, जिसके बाद फिर टीम का परफॉर्मेंस काफी लाइक थोड़ा अफेक्ट हुआ था बहुत ज्यादा। बट थैंकफुली इस वीकेंड कोपा डेल रे फाइनल की वजह से फिर वो चांस मिल गया है रेस्ट वाला। और आई थिंक वो बिकॉज वो सेम रीजन की वजह से बारसा के पास भी एक एडवांटेज होगा अपने चैंपियंस लीग टाइम में। बट वही है कि पीएसजी के पास लग्जरी है फार्मर्स लीग खेल में खेलने का, जिसकी वजह से दे कैन लाइक स्टिल रेस्ट प्लेयर्स डिस्पाइट हैविंग अ बिजी स्केड्यूल, जो लग्जरी मैन सिटी के पास नहीं एडेड एडेड टाइम में रॉड्रिगो मारेगा मतलब सही से। है। एडेड टाइम में पेनल्टी, आई वुड से कि एक पेनल्टी मिल जाएगी। चलो निखिल, स्कोर लाइन। Whenever is the first leg in Bernabeu, we don't do that well. हाँ, So that is that's my problem. To give a lot of lead to Real Madrid in the first leg. So I would rather go with like a very, very constructive 1-1 or a 2-1 in the first leg, Madrid. Uh, to give it, and second leg में, I know it's a returning game for Man City. It's going to be crazy. Technically speaking, yes, Man City is on a very good high, very high. But Madrid has its days. As I have always said, कि Madrid is a tempo team. सही टेम्पो पे आ जाए तो कोई आगे पीछे नहीं देखेगा. Those guys will score, right? So I think it will be the day of Madrid when the returning leg will be there, and we will beat City in their home. So I think that will be again a close shave, like a 2-1. So in all, I am predicting a 4-2 Madrid. Cool. Sogat, your take on City Madrid game and the scoreline, which you think? So what I feel is कि because of the scrapping of away goals, जो main chunk of match है, so first leg would be either a draw or a 1-1 nil, ठीक है, or a 1-0 match, ठीक है, in Madrid's favor, ठीक है। बट ये जो एतिहाड में जो लास्ट के 30 मिनट्स होंगे, वही असली गेम देखने को मिलेगा। दिस इज व्हाट आई फील, Yeah, बट with आई Madrid, it's like that. Yeah. या आई फील could be completely wrong, but I feel that City will edge past Madrid, just slightly edge past. Scoreline? A 2-1, a 3-2 max. Okay, I'm taking 3-2 as of now. किसके फेवर में? City. City. अच्छा, Also, during the time, I would like to ask you the scoreline of the Bayern versus Arsenal game. What do you think? I just the scoreline I without. think Arsenal will beat Bayern 3-0 in both legs combined. 3 or 4-0. Clear win Oh, with it's Arsenal. Yeah. 4-0.
Yeah. Clear winner after that. So शाश्वत को डाइजेस्ट ही नहीं हुआ फॉर लाइक शाश्वत इज इन ऑ कि मेरा बायर्न को इतना खराब बट नहीं, Bayern We is कंबाइन had we had to एग्रीगेट वो ask. थ्री We जीरो had, बोल रहा है, नॉट हाँ हाँ बोथ द हाँ लेग्स नहीं, नहीं नहीं कंबाइन। वो Okay, still मतलब 3-0 according बायर्न to him Bayern wouldn't be able to बायर्न score. बुंडेसलीगा में Bayern wouldn't score against बायर्न Arsenal. आई एम सेइंग कि बायर्न बुंडेसलीगा में एक सीजन खराब कर लिया तो भाई लोग तो समझने लगे कि भाई वो क्रिस्टल पैलेस जैसी टीम हो गई है। no, I believe that Bayern is a good क्रिस्टल team, पैलेस स्कोर्ड द फर्स्ट गोल अगेंस्ट मैन सिटी सो but I just believe क्रिस्टल Bayern का पैलेस हैज team स्टैंडर्ड्स complete नाउ shamble again under Actually, कैसे both बोल 2-0 both things करके are के वो coinciding. Bayern से हार गई बायर्न है। का डाउनफॉल एंड आर्सेनल का जो राइज हुआ है ना, दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं. सो फनी लग रहा है कि अरे आर्सेनल हरा देगी, बट यू हैव टू लुक एट इट्स नॉट दिस वे, इट्स लाइक दिस वे. आर्सेनल ऊपर कर गई है. लास्ट ईयर से दे हैव इंप्रूव्ड ग्रेजुअली, स्कोरिंग द मोस्ट गोल्स एंड एवरीथिंग, और बायर्न डाउनफॉल कर रही है. सो जो सौगत ने बोला, इट्स लाइक इट कैन हैपन एक एक्चुअली, We आई will बट हैव अ see on क्वेश्चन। Tuesday. बायर्न यू सेड बायर्न का डाउनफॉल, बायर्न इस सीजन नहीं जीती लीग, ठीक है, आई एग्री, वो डोमेस्टिक सारे कॉम्पिटिशन्स में कप में भी एलिमिनेट हो गई, बुंडेसलीगा में भी 16 पॉइंट पीछे हारी गई है प्रैक्टिकली। पर डाउनफॉल कहाँ से हो गया? पिछले 10 साल से लाइक बायर्न जीत रही है बुंडेसलीगा। आर्सेनल पिछले 10 साल लास्ट टाइम जीता था बुंडेसलीगा, सॉरी बुंडेस प्रीमियर लीग जीता था आर्सेनल आई गेस 2004 में। आर्सेनल लास्ट ट्रॉफी कब जीता था मेरे को याद भी नहीं है। आर्सेनल का अपराइज कहाँ से हो गया? इतनी बड़ी टीम तो इन नहीं हो टर्म्स गई ऑफ आर्सेनल सेकंड प्लेस अब आके, थर्ड प्लेस आके। अचानक तो से वी विल in जस्ट सी द terms of 10 ईयर टाइमलाइन, तो 10 ईयर टाइमलाइन में फिर अलग आएगा, हम 20 ईयर्स टाइमलाइन में जाएंगे फिर अलग आएगा, 30 ईयर्स टाइमलाइन में जाएंगे फिर अलग actually आएगा. शायद in terms of आर्सेनल game हैज presence बोल रहे हैं. Like आर्सेनल देखा होगा कि सिटी के हाँ अगेंस्ट पिछले 4-5 साल में वो हमेशा बीट हुए हैं, बट दिस टाइम दे शोड अप. लाइक And लिवरपूल से मतलब भी you नहीं आ रहे हैं, to take into लिवरपूल से भी नहीं आ consideration, रहे, सिटी you're से भी going नहीं into आ रहे. Etihad, you're a ball playing team and you go there with a 24% possession and you come out in a nil-nil draw. That's a win भाई against City. ऑल्सो एट and not एनफील्ड अगर होगा ना, एनफील्ड पे बजट भी अच्छा लास्ट परफॉर्म किया टाइम उसने. आई चेक्ड, बारसा फैंस इसको हराम बॉल बोलते थे कि पार्क द बस, हाँ 24% पोजेशन। ठीक है. हाँ तो वही ना, अगेंस्ट इट यार, हराम बॉल डूइंग इज वन थिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड कमिंग आउट विद द रिजल्ट इज अनदर थिंग ना. बाहर से मान लो करेगी ना सिटी अगेंस्ट, बाहर से वोंट एबल टू डू इट इफेक्टिवली, वो 4-0 5-0 हार के आ जाएंगे. सो इट डजंट वर्क एवरी टाइम, बट आर्टेटा वाज एबल टू डू इट. सो दैट्स व्हाई अगेंस्ट बायर्न ऐसे नहीं होगा, दे विल हैव दैट पोजीशन एंड एवरीथिंग. एंड आई एम यू कैन बेटिंग सी, आर्सेनल यू विल सी बिकॉज मतलब जो भी आर्सेनल होगा. में जो एंड प्लेयर्स है दे आर यंग एंड दे आर मोटिवेटेड, वेयरएज बायर्न में आप भर दियो स्टार्स. आई थॉट and व्हेन and साने एंड केन वुड प्ले टुगेदर दे वुड बी लाइक chaos, but they aren't. So I am just betting on the Arsenal players. They're young, they're talented, they are full डिफेंस fierce. पूरा डिफेंस पूरा ब्रोकन डाउन है, मिडफील्ड में कोहेजन नहीं है. इफ यू सी देम अगेंस्ट इवन देयर लाइक नॉर्मल ऑपोजिशंस, बहुत जल्दी टूट रहे हैं. मतलब इट्स जस्ट तुचल संभाल नहीं पा रहा है टीम को. एंड अ पर्सन लाइक आर्टेटा शुड वाइज इनफ टू कैपिटलाइज ऑन द मिस्टेक्स ऑफ बायर्न. So that's And what I feel. exactly, that's that sort of downfall kick when the manager is not able to capitalize. Let's say 2019 में when Nico Kovac संभाल नहीं मारा था टीम को जब लिवरपूल से हार गए थे. So that was their dip. मतलब downfall doesn't mean कि अरे एकदम यूनाइटेड बन गई. And what I said earlier कि Arsenal scored the most goals. They have scored 75 goals and considered the least goal in Premier League. So that has to be taken into account ना कि मतलब against Bayern की, मतलब उनको दिखेगा कि डायरेक्ट इफेक्ट कि आर्सेनल कितना इंप्रूव करी है पिछले सीजन से. एंड इट वोंट बी लाइक 5-1 पहले की तरह. सो चलो दैट्स ठीक है, व्हाट ठीक है, ठीक है, ठीक है. ठीक है, देखते हैं। It's a mental game as well, guys. So that also affects. Chalo, for my prediction part, I'll say 4-3 गौरव से City. पूछ ले। हम ही से गौरव से ही पूछा पूछा सॉरी उससे सॉरी, पहले। Gaurav has already said, yaar, 4-3 City, he said. अरे सबसे सॉरी, पहले हाँ उससे पूछा. बायर्न वाला गेम के बाद, सॉरी। I'll कंटिन्यू, कट also कर देना एक predict the बार। same scoreline 4-3 City because I'll be a little biased, as you guys must have seen with the Madrid fans. So I'll be also biased with my club. चलो आगे चलते हैं. इस चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल्स इस बार इतना इंटरेस्टिंग है कि हमारा जो थर्ड मैच है एटलेटिको वर्सेस डॉर्टमंड, वो भी बोरिंग नहीं लग रहा है. बोरिंग नहीं है भाई। आज एग्जैक्टली स्टटगार्ट से हारा एग्जैक्टली. है डॉर्टमंड.
स्टटगार्ट से डॉर्टमुंड हार गया आज 1-0। आज हार गया। हार गया। Yeah. टीम कैसी But खिलाई थी? Stuttgart is playing really well. It's third, I guess. Third या fourth पे है। आई गेस तभी अक्षांश आज ज्वाइन नहीं किया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। स्टार्टिंग विद अरे स्टुटगार्ट से हारी है। गौरव। स्टार्टिंग विद गौरव, how you see this match, Gaurav? Like, what's your take on this particular match? Because अभी तक जो भी मैचेस के बारे में हमने डिस्कस किया, आर्सेनल, बायर्न, सिटी, मैड्रिड, काफी अटैकिंग मैचेस, बट व्हेन इट कम्स टू एटलेटिको एंड डॉर्टमुंड वैसा प्ले स्टाइल नहीं दिखता है। So how you are seeing this match as a spectator? Because I guess you will be neutral in this particular match. I won't say neutral because I will be supporting the Spanish team, of course. Or Atletico Madrid should be winning this very easily. The aggregate score, which I think will be 5-1 in favor of Atletico Madrid. मैन Easily सिटी होना रियल मैड्रिड में चाहिए कौन सा स्पेनिश टीम है? मैन सिटी रियल भाई मैड्रिड में कौन सा स्पेनिश टीम है? मैड्रिड। वहाँ हम कर रहे वहाँ हैं भाई स्पेनिश सपोर्ट टीम वाला मैड्रिड। 5 लॉजिक नहीं। हम कर वहाँ रहे हैं स्पेनिश गौरव सपोर्ट टीम मैड्रिड लॉजिक सीओ नहीं को। ने भी है। 5 गोल नहीं सोचे क्यों मारेगा। टेक्निक अरे मेरे दिमाग में एक behind. ही गेम आता है व्हेन आई थिंक ऑफ एटलेटिको, जो इस सीजन उन्होंने बहुत एक हाई स्कोरिंग किया था डिलीवर। 7-0. तो हम्म और इट्स डॉटमेंट, दे विल क्रम्बल अंडर प्रेशर एट दिस स्टेज। रीसेंट अच्छा किया परफॉर्मेंसेस chance नहीं इंडिकेट आया। करते हैं। मतलब अच्छा क्या ही किया, बोल अच्छा। पाएगा वो। आप लास्ट गेम ऑफ द सीजन पे आप बॉटल कर देते हो पूरा लीग का अपना कमाया हुआ चीज, तो वो ओ एक हो स्ट्रेंथ तो दिखता मेमोरी ही है That इवेंचुअली। helps. मेमोरी ऑफ द डेकेड। ओ हो ऑल दे ये हैड तो टू डू वाज विन, दैट्स इट। और जिस सीजन एटलेटिको बायर्न को हरा ट्राई वो टू भी लूज। अपने टीम। तो हाँ 5-1। शायन। देखो यार, आई डॉर्टमुंड का मैच आई वॉच यू आई से कि उतना ज्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं देखता, बट बायर्न के अगेंस्ट मैंने गेम देखा था। डॉर्टमुंड जीती थी वो 2-0। अब ऑब्वियसली यू कैन नॉट टेक वन मैच एंड से कि वही सैंपल, वो इतना छोटा सैंपल साइज से यू जज, बट दे वर डिसेंट। डॉर्टमुंड वर डिसेंट। पर इस मैच में आई थिंक द ट्रिकी पार्ट विल बी व्हेन डॉर्टमुंड गो टू द आतंकवाद का अड्डा, व्हिच इज वांडा मेट्रोपोलिटानो। तो तो आई थिंक कि पहला लेग वुड बी लाइक अ ड्रॉ, 0-0 ड्रॉ, 1-1 ड्रॉ, गिवन कि एटलेटिको कैसे खेलती है। आई हैव सीन देम कि भाई बस पार करके छोड़ देते हैं। एटलेटिको आर नॉट अ वेरी गुड टीम बाय द वे। बार्सिलोना एक्सपोज देम। बार्सिलोना मेड एटलेटिको लुक लाइक एमेच्योर्स, इतना खराब। पर आई थिंक कि डॉर्टमुंड पहला लेग, या तो पहला लेग है कहाँ, डॉर्टमुंड के होम पे या एटलेटिको मेट्रोपोलिटानो? मेट्रोपोलिटानो। मेट्रोपोलिटानो। तो आई थिंक कि दे विल लूज 2-0, डॉर्टमुंड विल लूज 2-0। और सेकंड लेग में आई थिंक दिल इट विल बी 1-0, मोस्टली 1-0 डॉर्टमुंड विन, या फिर मे बी लेट्स सी इफ दे कैन इक्वलाइज। इफ दे कैन दे विल विन। इफ दे लाइक, अगर डॉर्टमुंड दो मार देती है और ऑन एग्रीगेट टाई हो जाता है, देन डॉर्टमुंड विल गो थ्रू। वरना अगर सेकंड गोल नहीं मिलता तो फिर वो 2-1 एटलेटिको जीतेगी। आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये गेम क्या होगा। इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल। इफ आई हैव टू गो, आई विल गो विद एटलेटिको, क्योंकि पहला लेग है मेट्रोपोलिटानो में, और उसके बाद अगर एक बार तुम जीत के पहला लेग में कंट्रोल ले लो टाई का, तो फिर सेकंड लेग में वो एटलेटिको कैन ऑलवेज पार्क द बस। तो बस वही रीजन है। So 2-1 एटलेटिको, what's आई से 2-1 एटलेटिको। okay to one Atletico? Nikhil. Go with 5-2 Atletico Atletico. over the two legs. Yeah. It's a Sogat. simple reason, हाँ, बस डॉर्टमंड नहीं कर पाएगा। डॉर्टमंड नहीं कर पाएगा, that's what I feel. They are good team but only on some days, very few days in fact. आज स्टटगार्ट से हार गया 1-0, should have been a good tough match but did didn't come up, so they don't have game winners in their team. और एथलेटिको, उसको बस उतना क्रेडिट नहीं मिलता एथलेटिको को जितना मिलना चाहिए। इट हैज बीन अ गुड टीम, बहुत लोग पुराने वाले लोग अच्छे सिंक में रहते हैं। आई थिंक 5-2। आई मीन Sogat. एटलेटिको भी Yeah, 1 second, Shayan. I'll हाँ ठीक है। यार let me जैसे कि complete this. एटलेटिको भी इस सीजन हाँ, वही टीम रही है जो ऑन सम डेज अच्छा खेलती है। दे आर फोर्थ इन द टेबल और ऑलमोस्ट फिफ्थ। एथलेटिक बिलबाओ से बस 3 पॉइंट्स आगे है। दे आर टचिंग फिफ्थ।
और चैंपियंस लीग में दे हैव बीन गुड। पहला लेग तो इंटर तो स्लॉटर कर दिया था, और सेकंड लेग में पेनल्टीज पे जीते वो। तो एटलेटिको के बारे में भी कहा जा सकता है कि दे आर गुड ऑन सम डेज ओनली। Sogat, now you can say. शायन राइटफुली मेंशन्ड कि दोनों टीम काफी मैच डे टू मैच डे वाली टीम। यू नेवर सी अ thick consistency over a period of months, over a period of time, or a Hmm. growth, individual growth of players apart from Griezmann। ठीक है, सारे जो भी प्लेयर्स अभी डॉर्टमुंड के लिए खेल रहे, एथलेटिको खेल रहे, थे सम मैचेस वेरी गुड, सम मैचेस कंप्लीट डॉग शिट। ठीक है, Hmm. सो आई फील दैट बहुत लाइक परफेक्टली बैलेंस्ड टाई है। ठीक है, दोनों टीम्स काफी एक दूसरे को टैकल करेंगी, एंड द गेम विल बी सेटल्ड लाइक क्वाइट हराम बॉल टाइप की, एक गोल से सेटल होगी। सो आई फील वन गोल टू एथलेटिको इन द सेकंड लेग। So you're predicting like 1-0 Atletico. Yeah, yeah. Weber. तो फर्स्ट लेग वनडे मेट्रोपोलिटानो में, एंड हाँ. जैसे तुम लोगों ने बोला कि एथलेटिको के पास एडवांटेज है, तो फर्स्ट लेग में दे विल प्ले द प्रॉपर फुटबॉल एज क्लॉप्स वन सेड कि इफ दे वांट दे कैन बी प्रॉपर फुटबॉल। सो फर्स्ट लेग में वो आ जाएंगे, यूजुअली दे डोंट अप्रोच अडॉप्ट नहीं करते कि अच्छा अटैक करें, बट अटल कंसीड क्योंकि देयर डिफेंस इज स्ट्रांग। बार्सा ने उनकी, डॉर्टमंड इज डूइंग बैड, बट you have to consider कि they top their group. They fucking top their group in group of death. PSG, Newcastle will be, they were playing well, and AC Milan and everything. उसके बाद they top their group and they prevailed in round of 16. So they are not that bad, and they are lucky कि उनको Atletico मिली, so they won't get that much exposed. So 2-1 first leg, and uh, at Signa Iduna, I think 1-1 is most feasible result क्योंकि Atletico won't attack. They'll probably just rely on कहीं धक्के से गोल चला गया, मतलब कॉर्नर वॉर्नर से मार दिया, कहीं कोई गुंडागर्दी जो करती है वो वैसा टाइप का, कि रोडी वोडी बॉल कुछ कुछ धक्के से सॉल वॉल मार दिया, they'll just edge pass them 1-0 and maybe let it concede and 1-1 टाइप का, so they'll go on aggregate 3-2 करके, but they will go through, they will definitely go through, there is no denying that। गुंडागर्दी करके, खराब बॉल खेल के, गंदा फुटबॉल खेल के, एंड अच्छा फुटबॉल खेल के भी फर्स्ट लेग में they'll just somehow get past the line। I'll also go with the group. As I said that Atletico will advance, so I also think कि Atletico ये मैच जीत जाएगा. सारे पॉइंट्स बोल दिए गए. I'll I'll just predict uh, 2-1 Atletico. Like not a big gap difference. Big gap, not. Huh. So I think this will be the only match out of the four where we all uh, where we all have the same point, like कि एक particular team advance कर रही है. ठीक है. True. Moving ahead. And it would be fun. It would be fun to see Bayern Dortmund advance. जब चारों गलत होंगे ना हम लोग, it would be fun to एथलेटिको नहीं प्रोग्रेस करी तो। हाँ. So moving ahead to the last match, obviously PSG versus Barcelona. Like इनकी हिस्ट्री काफी अच्छी रही है with respect to players also, with respect to Lionel Messi, with respect to Usman Dembele, and with Coach, respect to coach, the with coach. respect with respect to the coach, and with respect to Barcelona fans. So मैं मैड्रिड नेमार फैन से पहले नेमार पूछूंगा कि क्या टेक है आप लोग का इस मैच पे, हाउ यू गाइस सी, लाइक डोंट बी बाइस्ड कि पीएसजी को ही पहुंचा रहे हो, बस अपने पॉइंट स्टेट करो. तो आई स्टार्ट विद निक ऑन दिस. Hey, we were never biased, you were biased. But coming back to PSG versus Barca, I think easily Barca को जीतना चाहिए. PSG is totally like a two or three people run show.
उससे ज्यादा कोई स्टार प्लेयर या फिर अच्छे परफॉर्मेंसेस कंसिस्टेंटली नहीं डाल पाते हैं. फॉर एग्जांपल अ 7.5 रेटिंग इज नॉट दैट कॉमन इन पीएसजी, राइट? सो आई वुड डेफिनेटली वांट बारसा टू प्रोसीड हियर, ऑल्दो बारसा जो इंजरीज के साथ जा रही है, दैट इज द ओनली कंसर्न. उस टाइम तक कोई और इंजरी लेके ना बैठ जाए, दैट्स द ओनली कंसर्न. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक रियली गुड फुटबॉल कैन बी एक्सपेक्टेड, बिकॉज आई वुड हैव वांटेड टू सी दिस क्लैश जहाँ पे बारसा अपना बहुत फ्लूइडली अटैक कर रहा है, और पीएसजी स्ट्रगल करता है डिफेंस से ले जाके अटैक तक बॉल पहुंचाने का. द फ्रंट थ्री आर गुड, देयर दे हैव द पेस एंड एवरीथिंग, बट ये बीच का ट्रांजिशन बहुत मुश्किल हो जाता है. इट विल बी रियली गुड मैच टू सी, बट आई थिंक बारसा विल कम आउट एज विनर्स. फर्स्ट लेग कहाँ पे है? पार्क दे प्रिंसेस में है या फिर न्यू कैंप में है? Parc de France. Park difference. ठीक है. सो आई थिंक the my prediction would be 4-2 Barca Okay. in totality. Shine. Yeah. So, see, I will agree to the point which Nikhil said. Basically, in a nutshell, what he meant was that Barca have a superior midfield for attack. PSG ka superior hai, and you need something to link. But I'll say this: ki there's also a little bit of difference between the quality of coaches that the two teams have. One has Luis Enrique, one has Xavi. I'm not saying Xavi is a bad coach. He's a decent coach, but he's not a very good coach. Luis Enrique, on the other hand, is a very good coach. वो बंदा स्पेन की जो टीम लेकर के यूरोस के सेमीज में गया था. आई हेट लुइस एनरिके फ्रॉम द वेरी कोर ऑफ माय हार्ट, बट आई कैन नॉट डिनाई कि ही इज अ वेरी गुड कोच. Plus, I have seen PSG's attack in transition, and I've also seen Barca's defense in transition. Um, that being said, I still do believe कि PSG के midfield में थोड़ा सा like उतनी अच्छी midfield नहीं, उनकी attack अच्छा है. But I'll say कि पहला leg they'll win around like 1-0 or 2-1. Or second leg will be interesting. I think second leg Barca should win by 1 goal difference, which sends us to extra time. Uske baad, I'm not sure what will happen. But I'll say this ki the match will end in a tie at the end of 2 legs. Uske baad extra time mein anything can happen. I cannot predict. If I have to go, I'll go with Barca. Extra time mein. But I'll predict ki extra time tak it will be a tie. 3-3. 3-3 at the end of extra time. Sorry, at the end of normal time. और अगर उसके बाद होगा तो I'll go with Barca on penalties or Barca getting a goal in extra time. No, I just want the scoreline just before the penalties. Just What before do the you- penalty. Just before the 3-3. penalties. 3-3. 3-3. 3 in at the end of open play. Now moving to my Barca boys. Sogat. So I feel that because we have so much gap before the game, so the main aim will be to keep a clean sheet and to score a minimum like 1 goal at least. Okay, to not concede at all, to have a rock solid defense, and I believe which can be attained. Okay, not just because because हम लोग के पास इतना टाइम है, but I feel that PSG's attack is mostly Mbappe. If you can contain Mbappe through Koundé or through Araujo, you have contained 80-90% of PSG's attack chances. I truly believe that. ठीक है. So I feel that the first leg will be very tight and everybody will play for the second leg. And in the Montjuic, more confidence, fans, more pressure. I do believe it will be like a 2-1 win to Barcelona, both the legs included. Okay. Vaibhav. This this is the kind of game I I could like not feel कि कैसा जाएगा, but since इतना point of view सुना मैंने, and I'm like first leg since it's away leg and उनका
mainly what PSG do is they attack through Mbappe. That Ninja Turtle does everything. So if they are able to contain it, which they will do, because Kunde has been playing really well in past 1.5 months, and his past 5 to 6 games, he's been excellent, like proper Sevilla wala form. So if the back four is like Kunde, Araujo, Kubarsi, who's been exceptional, so I think they will be able to contain Mbappe, and first leg जाएगा 2-1 in favor of Barca. थोड़ा biased opinion होगा obviously, मतलब because Barca fan, so but Barca will just edge past them because उनका जो मेन, ये लास्ट टाइम बारसा ने जो गलतियां करी थी कैंप नो में, दे गॉट एक्सपोज्ड, और अपनी बैकलाइन वाज टेरिबल, लॉन्ग ले पीके एंड कौन कौन खेल रहा था, आई डोंट इवन रिमेंबर, डेस्ट एंड एवरीवन. सो उसके बाद दे वुडंट बी परफॉर्मिंग दैट बैड बिकॉज आवर लाइन इज वर्ल्ड क्लास. एंड since Xavi announced his that he'll be leaving Barca at the end of the season, we have been playing very well. They're highly motivated. So that way, Barca will, they won't be just conceding the goals like they used to, because Iñaki Pina is not at the goal. It's Andre Ter Stegen. So Yep. Barca 2-1 they will edge pass, and in the return leg, which will be at our home, Barca will dominate as they did against Napoli. Proper, they'll just open the spaces, probably introduce Roberto, जो कि later on आखिरी 30 minutes में कुछ impact create करेगा if he is played in the midfield Napoli against, because he's very experienced in substitution में. PC against he did the most miraculous thing to exist in QCL. So he could have an impact later on, and 3-1 in the second leg as well. So I don't see Barca losing because उनको पता नहीं क्या गलती करी थी, एंड एम्बापे इज वर्ल्ड क्लास है, मतलब बट इट्स नॉट लाइक कि उसको कंटेन नहीं कर सकते. I remember Junior Firpo pocketed him in the second leg in 2021. So Cubarsí and Inigo Martinez or Araujo जो भी खेले, and they could do the same. So 5-1 aggregate overall, 2-1 and 3-1 in favor of Barca. Too cool. पता है एक और चीज है, लाइक डिपेंड्स कि what Xavi's attitude is to this game. How does he approach the first leg? अगर वो पहले लेग के पहले आके अगर बोलता है ना कि इट इज टाइम टू शो आवर डीएनए, तो बारसा 4-0 हार रही है. अगर वो खेलता है थोड़ा लाइक व्हाट टू से प्रैग्मेटिज्म के साथ पहले लेग में, तो बारसा स्टैंड अ चांस हाँ. की प्रैग्मेटिक खेले. अगर वो आके बोले कि भाई वी विल शो आवर डीएनए, तो काउंटर पे खाता चला जाएगा. अरे बट एक चीज Because देखो it ना, is अगर Luis ठीक Enrique who है, is he's going up against. but has PSG shown this season that they can concede a lot, they can score a lot of goals. Sociedad was brilliant during group stage, मतलब उन्होंने group top किया था इंटर के against, and इंटर जो कि favorites थी, and 3 महीने बाद when things were different, उन्होंने उतना अच्छा perform नहीं किया, and they were terrible. Feb में like you can see Sociedad was terrible. तुम लोग even as a PSG hater, I would say कि यार PSG ही पहुंचेगी, मतलब I was like so unbest कि हाँ PSG, because Sociedad were terrible and PSG ने फिर still they won 2-0 2-1 something. ऐसे ही उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छा खेला अगेंस्ट सॉसिएडाड. तो उसके अगेंस्ट अगर तुम बारसा को ले रहे हो, एंड बारसा ऑब्वियसली वेल प्रिपेयर्ड होगी यार, अच्छे सेंटर बैक से अच्छा राइट बैक खेल रहे. ओनली थिंग इज आई लेफ्ट बैक कुड बी अ इशू, क्योंकि अगर डेम्बेले या फिर वट एवर दे प्ले, क्योंकि डेम्बेले काफी फॉल्स साइड भी खेला है रिसेंट टाइम में, तो कुलुमनी राइट में खेलेगा, वो स्ट्रेंथ है, वो सब है, मतलब उसमें हरकतें करेगा. तो इट कुड बी डिफिकल्ट ऑन द राइट फ्लैंक, मतलब अदर देन लेफ्ट इज साइड प्रेडिक्टेबल एम्बापे होगा, एंड उस पे 3 लोग चढ़ जाएंगे, कर जाएंगे. मेरी एम्बापे माइट बी साइलेंट, जैसे न्यूकासल ने किया था उस पे एट सेंट जेम्स पार्क, एकदम 4-0 एकदम भूत बना दिया था उनका. तो वैसे हो सकता है, तो बट डेम्बेले कैन I'm बी अ not saying थ्रेट, कि एंड वी player. हैव सीन यहाँ की पास प्लेयर्स. Yeah, what I'm saying कि player से उतना ज्यादा player quality I'm not doubting. I'm just saying कि coach कैसे tactically set up करता है टीम को. Depends on Xavi कैसे approach करता है. क्योंकि you can put a world alone. Real Madrid भी Leipzig के against दोनों leg में struggle किया था. Team Real Madrid की बहुत अच्छी है Leipzig से. It just dependent कि tactically how Leipzig were set up और tactically how Real Madrid was set up. बार्सिलोना रियल मैड्रिड से जो पहला वो जो क्लासिको अभी सुपर कप में 4-1 आ रही थी, वो 10 मिनट में 2 गोल चला गया था. वो इसीलिए था कि टैक्टिकली चावी सेटअप हाई लाइन जो हाफ लाइन पे खेल रहे थे डिफेंडर्स, 2 काउंटर 2 गोल खत्म. तो अगर वही काम करेगा वो जाके पीएसजी में पार्क डे फ्रांस में, तो फिर वही होगा. और खास के व्हेन यू हैव एम्बापे, आई डेम्बेले, डोंट थिंक ऐसा कोलोमुआनी. करेगा, लाइक हाँ नहीं, हाई वही लाइन वही आई इज एम सेइंग लाइक कि Guys, अगर guys, वो स्ट्रेटेजिक थिंग टू guys, डू. guys, guys.
we'll have this That is exactly what specific I'm thinking. discussion. अगर pragmatically Shine, approach करे shine, वो shine, tie shine, को game shine. को, हाँ. Shine, we can have this specific discussion on the particular match before the match, but we need to wrap this up as quickly as possible. So I'll ask Gaurav, what's your take on the match? Sorry for cutting you guys. Sorry for cutting off you guys. I hope you guys understand. It's okay. We are Yeah. used to it. Yeah. Gaurav, 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 we 3-1 कुछ यार बारसा एग्रीगेट पे होना चाहिए मेरे हिसाब से। ज्यादा दिक्कत फेस नहीं होना चाहिए। फर्स्ट लेग में पीएसजी पहला गोल स्कोर करेगा थ्रू एम्बाप्पे और एनीवन, पर दैट वुड बी द ओनली गोल दे स्कोर ओवरऑल। उसके बाद ओपनिंग नहीं मिलनी चाहिए। काउंटर हो कोई दिक्कत नहीं है, बारसा अपने डीएनए पे ही खेले और साबी आके बोले और फिर खेले, कोई दिक्कत नहीं मेरे को उससे। एंड एम्बापे कैन स्कोर, एम्बापे शुड स्कोर, मतलब उसमें तो उसका क्वालिटी दिखता है। ऑल्सो लास्ट यूसीएल प्रोबेबली उसका पीएसजी के साथ थिंग्स विल हैपन, बट बारसा should outscore Mbappe. They don't have to outscore PSG or something. They only have to outscore Mbappe, and they should be able to do that. So 3-1, agreed. 3-1. Okay. So, guys, just before the Atletico versus Dortmund match, I stated something that I hope that this match will be the only match where we all will go together towards on a specific team. So, just to prove my point, I'll go with PSG on this match. For this match, I'll just go for PSG. Biased alert, biased alert, biased alert. I'll go with a I'll go with a 3-2 scoreline. I think the first match will end on a draw 1-1, and then in the second leg at home, Barcelona will lose 2-1. Sorry, Barca boys, but I had to prove my. Just to be clear, Messi isn't playing for Barca, so इसीलिए तो no need अच्छा to है hate. for Barca या for PSG. I mean, Shashwat has something against Messi because last year का जो भी इसने raw brain something. So Messi is नहीं, not in अगर Barca. Shashwat I'm wearing a Messi shirt, इतना भाई ऐसा नहीं है unbiased. यार। अगर मेसी नहीं, PSG के लिए खेल रहा होता तो बारसा हैड अ चांस कि आराम से जीत जाए। और मेसी बारसा के लिए खेल रहा था तो पीएसजी had a chance, है ना? I don't know this. Maybe. You हाँ, guys, हाँ, ठीक ठीक, फुटबॉल नॉलेज तो है यहाँ। okay. We'll लास्ट talk more टाइम about football knowledge and all the other football stuffs in the coming videos. We can have all the debates there, but I think we have taken too much of time for this particular video. So it's a time to wrap up. Thank you, Nikhil, Saugat, Vaibhav, Gaurav, Shain, for this video, for coming into this video. And I hope you guys like the video, like the banter, like the debate, and hope to see you guys soon. Yeah, real soon, not the exact time which we took to bring this video, but yeah, I hope really soon. See I you like guys the in next. biasness. Yeah, I like the biasness. Yeah. To save your podcast prediction, you went with PSG. Just to save your podcast prediction. I mean, that is biased. आई वुड आल्सो से PSG, बट वही है कि बारसा भी रिलेटली थोड़ा अच्छा खेल रहा है, वरना एक महीना पहले या फिर 1.5 महीना पहले कोई मेरे से पूछता तो आराम से PSG होता। ठीक, चलो चलो।